Hello my dear student. Today I will solve some numerical on the basic of river swimmer, river boat problems. So this is your first question, but before I solve this first question, I give you some clue or concept that how this type of question can be solved. Because if you solve this type of question, first you clear some concept. So I give an example and describe that how can this type of question can be easily solved and what are the clue, which are the clue by using we solve this type of question. So let's start. This is a river and suppose the velocity of river is 7 km per hour. Suppose the velocity of river is 7 km per hour along this direction. Therefore, you must focus the direction of the velocity of river. Then suppose a man swimming from A point to along this direction with a velocity of 4 km per hour. Then in your question asks that how much time required to the man that he cover the river or pass the river. केते टाइम में तुम रिवर के से पास करी परबा कवर करी पार से क्वेश्चन में पचरेबा. सेकंड तुमके पचरेबा जे केते पाथ केते एक्चुअल पाथ से पास कला केते डायरेक्शन में पास कला एट व्हाट point it bends whenever it passes through the river. Pass through river. Now we question what is the actual distance traveled by the river? This type of बहुत बड़ा question पचरेबा. आगे question पचरे पारबा. What is the velocity of swimmer with respect to ground? So you must be focus or remember that if you solve this type of question, then you always take the velocity of swimmer with respect to ground. This velocity is velocity of swimmer whenever the swimmer passes from a point to inside the river. So this is the velocity of swimmer with respect to river 4 km per hour, and this is the velocity of river 7 km per hour along this direction. Direction is most important, but you know that whenever you swim inside the river, your direction is shift along this direction. So direction is shift along this direction. Why your direction is shift along this direction? You swimming along this direction, but due to velocity of swimmer along this direction, that the velocity of river along this direction, that velocity of river is pushed to you along this direction. So तमे तो जानी थीबो पानी जेतेबेले तमे स्विमिंग करबो बोले रिवर डायरेक्शन जेहेतु किछि वेलोसिटी रे जाउछि से रिजन रे तुम रिवर डायरेक्शन रे पळेबो. This is your actual path through which you swim, but due to the velocity of river, your path changes the velocity of direction of velocity of river. So देखो फास्ट में देखमा टाइम केते टाइम रे तुम ई मेन का तुम रिवर के दिगरी क्रॉस करछे. सो केते टाइम रे क्रॉस करछे हम के हिसाब रे जानि पारमा जे देखो इने तुम रिवर किछि डिस्टेंस देखिबा पाथ देखिबा तुम सपोज तुम देखिबा 16 किलोमीटर देखिबा सपोज. सो मन रखिथिबा टाइम के तुम दुईटा डायरेक्शन रे बाहर करि पारबो. तुम
vertical direction रे टाइम रो वैल्यू बाहर करि पारबो एंड horizontal direction भी टाइम रो वैल्यू बाहर करि पारबो. This direction is considered as vertical direction and this direction is considered as horizontal direction. मने रखिथिबो एटा माने क्लू. किंतु vertical direction रे टाइम रो वैल्यू बाहर करबा अछि तो vertical direction रे ता डिस्टेंस जानबो आ vertical direction रे velocity भी जानबो. So in this case how much time the man is covered the river. Suppose that is, we know that velocity is equal to distance upon time, so time is equal to distance upon velocity. So in this case distance is 16 kilometer and along this direction, so this velocity can be considered. This velocity consider because दुईटा वेलोसिटी होचे दुईटा वेलोसिटी रो केन वेलोसिटी यूज करबो तमे जदी ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तमे जेन डायरेक्शन में टाइम कैलकुलेट करो तमे आराम से बाहर जीवो किंतु ई डायरेक्शन में तमे डिस्टेंस ही नहीं जानबो किंतु वेलोसिटी होचे जदी ई डायरेक्शन में डिस्टेंस जानिथे त बोले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस इनटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इज कॉल्ड टाइम किंतु तमे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस जानबा ही नहीं तो ई कॉन्सेप्ट तो तमे टाइम बाहर करी नहीं पार किंतु ई डायरेक्शन रे तमे आराम से डिस्टेंस जानिछो 16 किलोमीटर आ ई डायरेक्शन रे तमे वेलोसिटी भी क्वेश्चन रे दैछे 4 किलोमीटर सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द टाइम दैट इज डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर एंड वेलोसिटी इज 4 किलोमीटर सो टाइम इज 4 सेकंड clearly developed. At what point it bends when it covers the river. तार माने केन पॉइंट रे तमरी बेंड होछि तार माने जदी सीधा जाई थांता बोले ई एसी पॉइंट रे जाई थांता किंतु दिस ओरिजिनल पाथ रू ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर द मैन is also change its direction and moves this point. Suppose this point is B. तार माने this is the drifted path through which the man drifted from its original path to drifted path due to the velocity of river. So how can we calculate this distance? We know the time. We already know the time, and we already know along this direction the velocity of river is 7 km. So we can easily calculate the horizontal distance because we know the velocity of river is horizontal velocity. मन रखिथिबो velocity of river को कह जेबा सबले horizontal velocity because से horizontal direction में मूव करछे. So horizontal direction में तमर velocity केते दिछे 7 km. एबे तम टाइम ता मन रखिथिबो टाइम ता ई पॉइंट टू सी पॉइंट टू बी पॉइंट टाइम ता समान ही लेबो तो ऑलरेडी टाइम ता बाहर जाइछे वेलोसिटी तो तमे जानिछो तो आराम से तमे डिस्टेंस जानि पारबो. So distance कितना है बा जे पॉइंट तो तुम्हारी ड्रिफ्ट है बा तो से ड्रिफ्टेड डिस्टेंस कितना है बा ड्रिफ्टेड डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम किंतु जेतो तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोचो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मींस रिवर ऑफ वेलोसिटी कितना होछ 7 इनटू टाइम ऑलरेडी तुम पाइछो 4 दैट इज 28 किलोमीटर. क्लियरली बुझलो तमे जदी एक्चुअल पाथ जदी कैलकुलेट करबा के चाहछो एक्चुअल पाथ रो डिस्टेंस जदी तमे कैलकुलेट करबा के चाहछो बोले यू इजीली कैन कैलकुलेट द एक्चुअल पाथ ऑफ डिस्टेंस बिकॉज़ इट इज ए राइट एंगल. So this is perpendicular, this is hypotenuse, so you can easily calculate this actual distance. That is, this is 28 square and this distance is 16 square, so this distance is 28 square, 16 square the root over. Clearly because this is perpendicular, so this actual distance AB because the swimmer cannot pass along this direction, AC direction में से path move नहीं करे किंतु से AB डायरेक्शन में मूव करबा ता पाथ चेंज हेबा ड्यू टू पासिंग ऑफ रिवर. सो मैं तुमके एतकीटा कांसेप्ट बुझेबा मीनिंग काण बुझेबा मीनिंग होची जे तमे टाइम जे कोनोसी रु कैलकुलेट करि पाबो किंतु टाइम कैलकुलेट करबा अछि तुम गुटे वे रे कैलकुलेट करबो जे तमे वर्टिकल डिस्टेंस नोचो बोले वर्टिकल वेलोसिटी के नेबो आ जे तमे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नोचो बोले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के नेबो आ टाइम बाहर करबो.
तापर ड्रिफ्टेड मींस बुझलो जे मेन टा एक्चुअल पाथ रु रिवर फ्लो रो काजे से केते पाथ ड्रिफ्टेड हला दैट इज होचे ड्रिफ्टेड डिस्टेंस आता एक्चुअल पाथ से रिवर फ्लो रो काजे मेन टा ए पॉइंट रु ई पॉइंट रे नै जे करी ए रु ई पॉइंट रे शिफ्टेड हला तो दैट इज एक्चुअल पाथ ऑफ द स्विमर अब असला वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज तमे जते बेले ई टाइप रो न्यूमेरिकल सॉल्व करूछ तमे फर्स्ट कंसीडर करबो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड so in this case velocity of swimmer with respect to ground can be written as velocity of swimmer with respect to ground can be written as velocity of swimmer देखो आमे इन velocity of swimmer with respect to river जानि छु तो तमे लिखि परबो velocity of swimmer with respect to river is equal to velocity of swimmer minus velocity of river इन तमर velocity of swimmer ground ने हबो इटा भी ground कंसीडर करा जिवो so velocity of swimmer with respect to river तमे जानि छु 4 is equal to velocity of swimmer in respect का करबो बाहर ग्राउंड रही रहबो जेतु बाहर तमे देखु छ तो इटा हमके दरकार माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रिवर तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही फ्लो हेबा 7 किलोमीटर yes 7 किलोमीटर पर आवर so velocity of swimmer with respect to ground is 4 plus 7 is 11 किलोमीटर पर आवर तमने तुम प्रैक्टिकली मन रखि थिबो जे तमर दुईटा तमर मेन रो वेलोसिटी विथ रिवर रो वेलोसिटी मिसले ही तमर से मेन टा ग्राउंड लेवल नु जणा पड़छ जे से बेंड होइते जाउची तमे देखो मेन तो निजर वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर रिवर वेलोसिटी वे रे मूव कला किंतु आउ तार वेलोसिटी चेंज होचे ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर सो टोटल वेलोसिटी मेन केते रे फ्लो होला से तार निजर वेलोसिटी रे फ्लो होला विथ रिवर वेलोसिटी रे फ्लो होला बिकॉज़ रिवर वेलोसिटी भी ताके एक्सर्टेड होला जद्वारा कि से रिवर डायरेक्शन में पड़ेला तो तमे ई टाइप में तमर ई टाइप रो कांसेप्ट के तमे सिंपली भी मन रखबो जे बाहर जे तमे देखु छ मींस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू यू और ग्राउंड बाहर देखु छ बोले से मेन ता सीधा ने जे करी टेड़ा जाउछ कारण से मेन रो वेलोसिटी सहित से रिवर रो वेलोसिटी के भी मिसेबा के पड़बो जे तमे बाहर देखु छ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज मेन रो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर वेलोसिटी मिसेबा के पड़बो मने रखिते तार माने तमे मने रखो जे बाहर जदी तमे देखु छ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जदी बाहर देखु छ त तमे मने रखबो जे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तार निजर वेलोसिटी के मिसेबा के पड़बो विथ वेलोसिटी ऑफ रिवर के मिसेबा के पड़बो बिकॉज़ से निजर वेलोसिटी रे भी जाउछे और रिवर वेलोसिटी रे भी जाउछे सो दुईटा वेलोसिटी रे जाउछे तो तमे बाहर देखबो बेले वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाहर देखो छ ग्राउंड रिस्पेक्ट रे से दुईटा वेलोसिटी रे जाउछे सो से कहे दुईटा वेलोसिटी के तमे मिसेबो बिकॉज़ से दुईटा वेलोसिटी रे जाउछे बोली करी से केडा जाउछे तार पाथ चेंज होछे क्लियरली एबे देखमा क्वेश्चन देखमा हां जदी तमे एंगल पचरे छे केते एंगल रे से जाउछे एंगल भी तमे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाहर करि पारबो tan theta is equal to perpendicular by this is 90 degree hypotenuse आराम से बाहर जीवा किंतु ई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर करबो सो आराम से तमे एंगल सब जानि पारबो तो देखो ए क्वेश्चन हिसाब रे हम आंसर बाहर करना सो टाइम हो कि जहां भी हो टाइम तमर के हिसाब रे कैलकुलेट करबो वर्टिकल डायरेक्शन रो डिस्टेंस विथ वर्टिकल डायरेक्शन रो वेलोसिटी थिबा ले भी टाइम कैलकुलेट करि पारबो अदरवाइज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रो डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रो वेलोसिटी थिले भी हमें टाइम कैलकुलेट करि पारबो आ ऑलरेडी मन सब बेले मन रखिथिबो जे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू तमे ग्राउंड सब बेले बाहर करबो बाहर तमे देखु छ जेहेतु बाहर तम वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बाहर तम वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए टाइप रे जदी बाहर करबो बेले ही तमर आंसर टा इजीली बाहरिबा ग्राउंड लेवल रो रेस्पेक्टिव और देखो ये क्वेश्चन में देखो a man can swim still water at a speed of 3 km per hour काना देखो तो गुड वाटर
देखो ये वाटर रे कान होचे ए मैन कैन swim still water at a speed of 3 km per hour. That means man water रे फ्लो होचे केते बोले स्विमिंग करूचे केते स्पीड रे 3 km per hour. तो वाटर रो रेस्पेक्ट रे फ्लो होचे मन रखि दिबो सेटा वाटर रो रेस्पेक्ट रे ही कहछि किंतु क्वेश्चन जाक तापर डायग्राम बनेबो he want to cross the river that flow he wants to cross the river that flow at 2 km per hour. That means this is the velocity of the river. Then go to reach point directly opposite to his starting point. The starting point से directly बाहर तार माने suppose this is starting point. Suppose this is starting point A, and when it swimming, then it reach to the लगा लीजिए starting point रो opposite direction में बाहर तार माने starting point रो सीधा सीधा opposite direction में से बाहरिला as per your question and reach point directly opposite to his starting point. The starting point of opposite direction they से reach कला. तो in which direction it try to swim? Second direction में swim करवा द्वारा से इने के आसबा. तो तमे निजे भाबो ई डायरेक्शन में तो से स्विम नहीं करे बिकॉज़ ई डायरेक्शन में देखो बारंबार बुझो जे भल कटिए देखो तम मैन का ई डायरेक्शन में ही स्विम करबा बिकॉज़ रिवर वेलोसिटी ई डायरेक्शन में कंसीडर करबो. This is the velocity of river. तो मैन टा ई डायरेक्शन में गले तो से रिवर वेलोसिटी रो काजे से किछि डायरेक्शन ई आर के जीवा और बी के आसबा. सो मन रखि दिबो इनु तो तमर क्लियरली जाना पड़छे जे क्वेश्चन हिसाब से तम मैन टा ए रो बाहरिबा और तार ऑपोजिट बी रे पहुंचीबा अछि किंतु केन डायरेक्शन में से बाहरिले से बी रे पहुंचीबा केन डायरेक्शन में बाहरिले ई डायरेक्शन में ही बाहरिले because river velocity e direction में अछि. This is the velocity of river. तो जदि मैन था e डायरेक्शन में बाहरिबा मैन था e डायरेक्शन में बाहरिबा लेकिन ई रिवर वेलोसिटी रखा जे से लास्ट के तक मेन पॉइंट बी पॉइंट के जीवा एज पर द क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट रो ऑपोजिट पॉइंट के जीवा केते बेले जीवा जदि मैन था e डायरेक्शन रे बाहरिबा. क्लियरली बुझलो. सो देखो सो क्वेश्चन हिसाब से तमर मैन ई डायरेक्शन में जीवा अच्छे सॉरी क्वेश्चन हिसाब से ई ए रो ऑपोजिट पॉइंट रे इस मैन जेन स्टार्टिंग करी छे ए पॉइंट रो बाहरी छे से तार ऑपोजिट पॉइंट बी पॉइंट के जीवा अच्छे. तो सेकंड डायरेक्शन में बाहरिबा सपोज दिस इज थीटा एंगल ई डायरेक्शन में मैन ता बाहरी. सो दैट ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर द मैन स्विमिंग एट दिस डायरेक्शन. क्लियरली बुझलो तार माने ई डायरेक्शन में मैन बाहरिबा तार माने दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river. Along this direction the man can be moved so that it moves towards the opposite to the starting point or reach to the point which is opposite to the starting point. So e direction बाहर करबा माने हम थीटा बाहर करना. तार कहै how much time he take cross the river if the river is depth or wide 0.5 km. तार माने वाइड दीचे तम रिवर 0.5 km. तो बहुत सहज क्वेश्चन आराम से बाहरी जीवा किंतु तुम ए डायग्राम मने जानबा আছে और डायग्राम भी किछि नै ना जे स्टार्टिंग पॉइंट ए अछि मैन ता पहुंचीबा बी पॉइंट के. तो केन डायरेक्शन से गले बेले बी पॉइंट पे पहुंचे. तो तुम जानिछो से सीधा सीधा गले केबे भी बी पॉइंट ने नहीं पहुंचे काजे सीधा सीधा गले रिवर वेलोसिटी रो काजे यार के पलेबा. तो से ई एंगल रे गले ही से रिवर वेलोसिटी रो काजे लास्ट ई एंगल के आसे बी पॉइंट के आसे. सो क्लियरली बुझलो. तो हम बाहर करना फर्स्ट इन व्हिच डायरेक्शन इट कैन बी मूव और ट्राई टू मूव. सो क्वेश्चन में हमके वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दी दी छे. सो तमर दुईटा डायरेक्शन तमर बाहरीबा देखो दुईटा कंपोनेंट बाहरीबा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर. तो दुईटा डायरेक्शन बाहरीबा तापर देखो केते बेले से निजो जेन पॉइंट रू बाहरी छे से पॉइंट के जीवा जेते बेले तार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ई रिवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टा ई इतार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सन कैंसिल होबा. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में केन वे रे बाहर करबा देखो इटा होते तार स्टार्टिंग पॉइंट से ई डायरेक्शन में जीवा कथा किंतु ई एंगल दिगल गला थीटा एंगल दिगल गला. सो मेन रो दुईटा कंपोनेंट आसला इटा तो VSR और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज 3 km/h. तो आई कैन बी
write 3 km/h. So this is theta, so this is taking as 3 cos theta and this taking as 3 sin theta. थीटा जाके लाइन होता है 3 cos theta. क्लियरली बुझला? तो देखो जेट पॉइंट टू मारी छे से पॉइंट के जीवा, तो केता बेले जीवा रिवर ऑफ वेलोसिटी तो अछि, रिवर ऑफ वेलोसिटी के कैंसिल कले ही जीवा, तो से रिवर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में अछि, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ई डायरेक्शन में अछि. केता अछि रिवर ऑफ वेलोसिटी 2 अछि, रिवर ऑफ वेलोसिटी अछि 2, आ इधर वेलोसिटी अछि 3 km/h 3 km/h. सो देखो रिवर ऑफ वेलोसिटी के मूल्य लगे देली न, रिवर ऑफ वेलोसिटी अछि 2 km/h. तो तुम निजे बुझो जे ई मेन रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिवर रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी समान हेले ही, देखो ई मेन रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अधिक हेले मेन ई आर के पलेबा, रिवर रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अधिक हेले मेन ई आर के पलेबा. किंतु दुई लोकर वेलोसिटी यदि समान हेबा बोले दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ man or swimmer and river can be cancel each other, so that the river is move along straight line. A रू से B के पहुंचीबा, तो A रू B के पहुंचीबा केते बेले जेते बेले तार man रो वेलोसिटी और river रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल हेबा. तो मन रखिथिबो एटा ଗୋଟେ न्यूमेरिकल का जो मेन पॉइंट जे स्ट्रेट लाइन केते बेले जीवा जेते बेले ई man रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आज मैं दुईटा वेलोसिटी रे जाउचे, ये आके जाउचे मींस मैं तम ऊपर के जाउचे वर्टिकल वेलोसिटी ने और याडे जाउचे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रे. सो तम रिवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तम मैं कितना करछे आके बड़े नउचे, तो से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर टा मेन रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी संग यदि कंपेयर करबो बोले कैंसिल ही जीवा बोले तम से स्ट्रेट लाइन ही जीवा, से 3 cos थीटा वेलोसिटी रे ही आके जीवा. सो आम तो एंगल पचरे छे, एंगल दरकार, सो एंगल आराम से बाहरी जीवा. हम तो जान लो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2, और 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 कहां से लिखली, बिकॉज़ क्वेश्चन में क्लू दी छे दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू ऑपोजिट पॉइंट रे ही रीच करबा. तो स्टार्टिंग पॉइंट रो ऑपोजिट पॉइंट रे रीच केते बेले करबा जेते बेले इधर हमें वेलोसिटी देखो एंगल नीचे बेले कंपोनेंट कंपल्सरी बाहर करबो, तो इधर कंपोनेंट बाहर कि नहीं थीटा ले 3 cos थीटा बाय 3 sin थीटा, तो ई दुईटा वेलोसिटी रिमूव करबा ई मेन टा विथ वर्टिकल वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और whenever this man moves along straight line to opposite to the starting point, then its horizontal velocity is always cancel with the horizontal velocity of the river. और रिवर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कैंसिल जदी नहीं हबा बोले ई तार पाथ चेंज करबा, किंतु रिवर और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जदी मेन रो वेलोसिटी कैंसिल हबा, मेन रो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिवर रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसिल हबा, तो मेन सीधा पड़ेगा मन रखिथिबो. सो इन दिस केस वी कैन बी राइट sin थीटा इज इक्वल टू 2/3. तो थीटा इज इक्वल टू तब बाहर करबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच टाइम बी टेकन टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 0.5 किलोमीटर. तार माने रिवर रो डिस्टेंस दी दी 0.5 किलोमीटर बा वेट, सो से केते टाइम रे तुम रिवर के क्रॉस करबा, तो डिस्टेंस आराम से दी दी छे तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी दी छे केते 0.5 किलोमीटर, 60 के बड़े जाउछे. सो टाइम इज इक्वल टू तुम बारंबार कहली जे टाइम तुम दुईटा डिस्टेंस रो कैलकुलेट कर पारबो, दुईटा वेलोसिटी रो भी कैलकुलेट कर पारबो, किंतु जेन वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी बेले वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर करबो और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रो टाइम बाहरीबा. सो इन दिस केस तुम क्वेश्चन रो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी दी छे, तो आराम से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रो टाइम बाहर करबो, बिकॉज़ तुम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब जानलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केटा होची 3 cos थीटा. 3 cos थीटा बिकॉज़ मन रखिथिबो सब बोले क्वेश्चन जेते बेले बनोचो सॉल्व करूचो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सब बोले तार दुईटा कंपोनेंट हबा, ई दुईटा वेलोसिटी रिमूव करबा. तुम जदी कंपोनेंट बोले से स्विमर टा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमूव करबा, ए वर्टिकल वेलोसिटी रिमूव करबा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ने रिमूव करबा, किंतु केते बेले स्ट्रेट लाइन जीवा जेते बेले तार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टा रिवर ऑफ वेलोसिटी संगे समान हबा, बोले से रिवर ताके आउ ता डायरेक्शन के चेंज करि नै पारे जाडा कि स्ट्रेट लाइन जीवा. बहुत प्रैक्टिकली तुम बुझो किछ नै.
सो इन हमें आराम से टाइम बाहर करमा जेतु हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दी छे तो તમે જાણો વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ સો ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન વેલોસિટી સો ડિસ્ટન્સ ઇઝ 0.5 અપોન વેલોસિટી કેમ વેલોસિટી કન્સિડર કરવો જેતु હॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ની છે તો हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कन्सिडर करबो तो ई वेलोसिटी तमर दुईटा कंपोनेंट डिवाइड आलो सो ई कंपोनेंट हवा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी बिकॉज़ तमर वर्टिकल डिस्टेंस कन्सिडर करछो तो तमर वर्टिकल वेलोसिटी भी कन्सिडर करबो तो ई कंपोनेंट दुईटा भागे डिवाइड आलो तो এটা वर्टिकल वेलोसिटी रे डिवाइड হচ্ছে सो 3 cos थीटा दिस इज टाइम आ जदी तमे cos थीटा रो वैल्यू जानबा के चाहो आराम से जानि पारबो बिकॉज़ तमे sin थीटा रो वैल्यू जानि छ तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मींस 4/9 cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9 4/9 ର ରୁଟ ହବ ତ ସଲ୍ଭ करबो सॉल्व कला परे cos थीटा जगह थी पुट करबो आंसर तो बाहरी जीव बहुत सहज से सॉल्व करबो निजा आंसर तो এটা ଥିଲା ফার্স্ট क्वेश्चन দেখো क्वेश्चन रो फास्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो बुझलो जे जो स्विमर का एंगल चेंज करको जाउची तार तमर दुईटा वेलोसिटी बाहरी पारबा आ स्ट्रेट लाइन केते बेले जीवा से स्विमर रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर रो वेलोसिटी रो संगे समान हबा ले रिवर तार एंगल के चेंज करी नहीं पारे ज्यादा कि तार वर्टिकल वेलोसिटी रे ही स्विमर ता स्ट्रेट लाइन पळेबा मन रखिबो सो स्ट्रेट लाइन जीवा मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखमा हमें a man can swim at a speed of 3 kilometer per hour still water एबे स्पीड हवा ना फर्स्ट क्वेश्चन के लेट हला बुझबा you want to cross a he wants to cross a 500 meter wide river 500 meter wide river moving with 2 kilometers per hour. He keeps himself always at an angle. He keeps himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. 120 degree with the river flow while swimming. So find the time it takes to cross the river. Find the time this is your first question takes to cross the river. The second question, at what point the opposite bank will be arrived? At what point the opposite bank will be arrived. So this is your first question and you can easily solve this question. First you can draw a diagram.
सो देखो क्वेश्चन में कहছে मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर स्टिल वाटर तार माने वाटर रेस्पेक्ट तम मैन टा 3 किलोमीटर पे फ्लो होची ही वांट्स टू स्विम करছে ही वांट्स टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर तो देखो जेहेतु किलोमीटर पर आवर अछि एटा किलोमीटर कर दे 0.5 किलोमीटर हबो मूविंग विथ 2 किलोमीटर पर आवर तो कहছে he keeps himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming तार माने suppose this is river and this is river and this is the direction of the river flow and what is the velocity of this river 2 km as per the question velocity of river is 2 km per hour velocity of river is 2 km per hour and the man moving with 3 km per hour with this is the direction of river flow and along this direction he kept an angle 120 degree and moving that means this angle is 120 degree through which the man can be moving through the water or river with river flow while swimming अब रिवर width दीचे तुमके width दीचे तुम 0.5 किलोमीटर लगी दियो 500 मीटर को अब तुमके क्वेश्चन में पूछने चाहिए find the time he takes to cross the river and what point he opposite to the bank will be arrive opposite bank means जेन point ru bahari chi तापरे जेते बेले से आके बड़ी बड़ी जीवा से केन पॉइंट पे तम arrive करबा से जीटा जिनिस हमें इनो बाहर करबा सो आराम से बाहरी परबा किछि असुविधा नै ना तो तमे आगो कंपोनेंट निको बाहर करो तो दिस इज द velocity of swimmer with respect to river सो तुमके बाहर करबा के टाइम तो टाइम आराम से बाहरी जीवा का जे तुमके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दै छै वाटर विड्थ मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो तमे जदी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाहर करि पारबो ले टाइम टा आराम से बाहर करि पारबो सो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केते हबा सेडे जानबा अछि बोले हमके ई कंपोनेंट के कंसीडर करबा पड़बा तो ई कंपोनेंट इटा जदी 120 हेले केते जल्दी हो 60 डिग्री तो एबे तमे आराम से बाहर करि पारबो जे डायग्राम बना दोचे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिस एंगल 60 डिग्री सो दिस कंपोनेंट इज v s r जेतु कंपोनेंट रो एंगल लागि करा छै cos 60 and v s r केते दिचे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 3 km per hour that is this is 3 km per hour this 3 cos 60 and this is VSR sin 60 that means this is 3 sin 60 क्लियरली बुझला तो आराम से तुम एबे टाइम कहि पारबो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस केते अछि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अछि 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय बिकॉज़ यू नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केते अछि देखो बाहरी वाला रिवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुम कंपोनेंट दुटा बनेला तो देखो टाइम बाहर कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिवाइड करबो दुटा वेलोसिटी को मन इच्छा डिवाइड नहीं करबो अब इने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही नहीं ना एंगल हिसाब के होछे तो अब तुम कंपोनेंट बाहर करबो तो ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 3 sin 60 तो 3 sin 60 हबो तो बाहर करबो sin 60 √3/2 √3/2 तो जहाँ भी बाहर करबो टाइम बाहर जीवा तापर एबे बाहर करबो एट व्हाट पॉइंट द ऑपोजिट बैंक विल बी अराइव तार माने केन पॉइंट ले अराइव करबो देखो ई तो मूव करू छी डायरेक्शन रे तम इटा जदी हम ए बी दमा तो सपोज धरो ई अराइव कला ई पॉइंट रे तो तुमके ई पॉइंट पछे ड्रिफ्टेड जे केते पॉइंट दा लका जे एट व्हाट पॉइंट द ऑपोजिट बैंक विल बी अराइव तामे सपोज धरो मुई पॉइंट नेली सी पॉइंट ई मैन ता स्विमिंग कला ई डायरेक्शन दे किंतु रिवर रो वेलोसिटी लका जे ई पॉइंट रे आसबो ई पॉइंट पे पळे आसला सो केते पॉइंट होला बीसी तो तुमके ई केन डिस्टेंस पछरे छी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पछरे छी तो तमे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जानि छ रिवर रो वेलोसिटी इज
कंसीडर एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ बे तमे टाइम भी पाई गलो आराम से तमे ई बीसी पाई जीवो सेटा कहछि ना क्वेश्चन एट व्हाट पॉइंट ऑपोजिट बैंक विल बी अराइव जे से जेते बेले आके बोलला से केन पॉइंट ने तमे अराइव करबा पहुंचीबा केन पॉइंट ने तो ई ने पहुंचीबा कथा किंतु ई ने नहीं पहुंची करी नहीं पहुंची तमने ड्रिफ्टेड होचे त ओरिजिनल पाथ ई ने के जीवा कथा जेतु ई डायरेक्शन में मूव कला किंतु ई डायरेक्शन में मूव कला किंतु ई पॉइंट रे पहुंचीबा कथा किंतु ई पॉइंट के आसला ड्रिफ्टेड होला सो दिस ड्रिफ्टेड पॉइंट BC can be calculated by this is horizontal distance so along this direction the velocity of river is achieved so river velocity of river is considered as horizontal velocity and we get time so this BC is equal to second question answer BC is equal to time into velocity because distance हमें बाहर करू तो horizontal velocity केते छै 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर सो तो बाहर करबो BC is equal to टाइम जेता भी बाहर छै देखो हां और एक चीज सॉरी मु टिके रंग होला देखो तम इने तम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दुईटा आछि बोले तम रिवर हॉरिजॉन्टल देखो रिवर तो कंपोनेंट अछि तो रिवर हॉरिजॉन्टल दुईटा वेलोसिटी आसला गुडे वर्टिकल वेलोसिटी आसला और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आसला तो तम वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल वेलोसिटी 3 sin थीटा रो तो वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी गला टाइम पाई परलो एबे हमके कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाहर करबो जे केन पॉइंट रे बी रु सी के शिफ्टेड होछि सो दुईटा वेलोसिटी रे शिफ्टेड हेबा तो हमें डायरेक्ट वेलोसिटी 2 लेखि नै परबा बिकॉज़ वर्टिकल वेलोसिटी दुईटा अछि पुरे 3 cos 60 अछि और 3 cos 60 रे तमर मेनटा आके जाउछे तार अपोजिट डायरेक्शन में कार वेलोसिटी अछि रिवर वेलोसिटी अछि तो ने मैं रिवर वेलोसिटी लेबी रिवर वेलोसिटी केता अछि 2 अछि तो 3 cos 60 केता बा देखो आगो 3 cos 60 तमर 1.5 मतलब 1/2 3/2 हबा 1/2 3/2 त माने इरा 1.5 सो देखो ठीक भल कर देखो जे ई मेन रो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अधिक अछि ई रिवर वेलोसिटी अधिक अछि रिवर वेलोसिटी अधिक अछि तो से मेन ता रिवर डायरेक्शन के जीव हां जदि मेन रो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अधिक थांता मेन ता आको आइसा किंतु जेतु रिवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अधिक अछि और रिवर अपोजिट डायरेक्शन में मेन मूव करूछि सो ई डायरेक्शन में ही दुईटा कंपोनेंट अछि तो रिवर अपोजिट डायरेक्शन में जेतु तमर मेन जाउछि तो इना हॉरिजॉन्टल नेट वेलोसिटी केता बा डिफरेंस कोले हेबा सो ने 2 - 1.5 केता बा 2 - 1.5 0.5 हेबा सो एबा हम टाइम इनटू 0.5 लेबो तो टाइम जगह के लिए जेते अछि फुट को 0.5 इनटू 3 sin 60 क्लियरली बुझलो देखो इटा के हिसाब से लिखलो टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केते आबा 2 - 1.5 2 - 1.5 that is 0.5 horizontal velocity time into horizontal velocity so बाहरी जीवा लगबो टाइम रो वैल्यू तमर जहा भी बाहरी छे पुट करबो टाइम रो वैल्यू तमर बाहरी छे 1/3 √3 टाइम जाती पुट करबो 1/3 √3 लास्ट के BC बाहरी को जहा लगबो ठीक है तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन तो बहुत सारे किछ नै हला तमे कंपोनेंट दिछ मींस तमे ई मेन रो स्विमर बोले वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू मेन के सब एक्स्ट्रा बनेबो तार कंपोनेंट दुटा एक्स्ट्रा बनेबो आ देखबो इजीली बाहरी जीवा तमर ई डायरेक्शन में तमर कहै छै जे केते शिफ्ट तमर तार एक्चुअल पोजीशन शिफ्ट हला किंतु इना रिवर भी तो किछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अछि सॉरी मे स्विमर भी किछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अछि और रिवर वेलोसिटी भी अछि से माने परस्पर कैंसल आउट हेबे बोले नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बाहरीबा और टाइम इनटू नेट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाहरी जीवा तुम जेन डिस्टेंस के तुम मेनटा तार ओरिजिनल पाथ रो सी पॉइंट के शिफ्ट हिच देखो और दुईटा क्वेश्चन देखो देखो टाइम होगा ना क्वेश्चन को लिखने में डायरेक्ट देखो सब तरह এটা হচ্ছে রিভার তার উইড দিছে তোমার
12 किलोमीटर आउ से 37 डिग्री एंगल रिमूव करूचे आउ तमके रिवर वेलोसिटी देवा कथा एक्चुअल रिवर वेलोसिटी अदर रिवर वेलोसिटी हम नीचे कंसीडर करना 8 किलोमीटर आ तुमके क्वेश्चन में पचारे थिबा जे टाइम पीरियड केते हबा आ केते डिस्टेंस में से ड्रिफ्ट हबा तुम निजे बाहर करबो 37 डिग्री जेहेतु वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर तो 37 वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर तो दिस इज 37 this angle is cos theta तो VSR cos 37 this is VSR sin 37 सो तुम टाइम पीरियड बाहर करो डिस्टेंस तो तुमके दे दीचे 12 किलोमीटर so time period is equal to horizontal distance by horizontal velocity because v is equal to distance upon time so time is equal to distance upon velocity so time जगह थी तुम्हारा लगा distance कितने दीचे 12 इक्वल horizontal velocity कितने अच्छे तो इटा सॉरी इटा vertical distance तो vertical velocity कितने अच्छे VSR sin 37 VSR sin 37 तो VSR तुमको क्वेश्चन में दे दीचे तुमार VSR तुमार दे देते बार किसी में लिखना है और जब VSR दीचे तुमार 10 चलो तुम्हारे पास 10 sin 37 इन 10 cos 37 तो तुमार जेहेतु वर्टिकल डिस्टेंस और वर्टिकल वेलोसिटी के कंसीडर करो बिकॉज़ टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बाय वर्टिकल वेलोसिटी अदरवाइज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किंतु तुमके लिए वर्टिकल डिस्टेंस दे दीजिए आराम से टाइम मार जाए सो वर्टिकल डिस्टेंस अपन वर्टिकल वेलोसिटी कितने 10 sin 37 कितना वाला होगा 3 4 5 sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 perpendicular 3/5 sin 37 is equal to 3/5 और sin 37 लिख दियो so time is equal to 12 by 10 3/5 5 cancel 12/4 this is time so इटा तुम क्वेश्चन माने होचे सॉल्व करबो तो तुम काइनेमेटिक्स सरी गला आ भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे निजे करवाए ट्राई करबो थैंक यू।